Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are going to do your English grammar book. This is a book 8 and the name of your book is English Grammar Plus Skills Unleashed Workbook. So children, let's start with the book and today we are going to do your chapter number 1 and the name of the chapter is sentences. So let's start with the chapter. So all of you know what is a sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. A sentence always has at least one finite verb. So sentence में हमेशा एक finite verb होता है. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. So sentence हमेशा एक capital letter के साथ शुरू होता है और full stop से end होता है. We also add question mark when we ask a question. जब question पूछा जाए तो question mark लगाना है. And we insert an exclamation mark. जब हम किसी भी surprise या फिर feeling की बात करते हैं तो हम exclamation mark लगाते हैं. There are 4 kinds of sentences. So sentences are divided here in 4 categories. First one is assertive or declarative, then interrogative, imperative, and exclamatory. So here children, assertive sentence is divided into 2 parts and they are affirmative or positive and negative. So let's learn more about these types of sentences. A sentence in the form of statement is called an assertive sentence. So वो statement जो simple sentences होते हैं वो assertive sentence कहलाते हैं और declarative sentence इन्हें declarative sentence भी बोलते हैं. For example, Saurav is a good boy. Suman goes to school every day. He goes to Meerut today and the old lady walked slowly. So यहाँ जितने भी sentence हमने अभी देखे ये सारे क्या है कुछ ना कुछ बातें बता रही है. सिंपल सेंटेंसेस हमने यहाँ पे यूज किए. एंड assertive or declarative sentence may be affirmative or negative. So assertive sentence या फिर जो declarative sentence है वो affirmative हो सकता है या फिर negative sentence हो सकता है. He will come वो आएगा ये positive sentence है. That means it's an affirmative sentence. And he will not come ये एक negative sentence है क्योंकि यहाँ पे no या फिर not का यूज किया है. So जिस भी सेंटेंस में no या not का यूज किया गया है that sentence is a negative sentence. Now the second one is a sentence in the form of a question is called an interrogative sentence. So वो sentence जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे sentence को हम interrogative sentence कहते हैं. For example, have you read the book? Was he swimming? When did you meet her? Did you meet Amit yesterday? So यहाँ जितने भी examples दिए गए हैं सब में कुछ ना कुछ पूछा गया है. So जिस भी sentence में कुछ पूछा जाए कोई question पूछा जाए उसे हम interrogative sentence कहते हैं. Now the third one is a sentence in a form of command, request, etc. is called imperative sentence. So ऐसे sentence जो किसी को command दे रहे हैं या request कर रहे हैं या फिर किसी को order दे रहे हैं ऐसे sentence हम imperative sentence की category में रखते हैं. So here some examples are given children. Please bring me a glass of water. Shut the door. Let's go for swimming. Send the servant to the market. So अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी को कोई किसी तरीके का ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाए. जैसे यहाँ पे फर्स्ट है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की जा रही है. शट द डोर ऑर्डर दिया जा रहा है. लेट्स गो फॉर स्विमिंग एक एडवाइस दी जा रही है. सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट. सो हियर आल्सो यू कैन सी ऑर्डर इज बीइंग गिवन. सो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज a sentence in the form of an exclamation expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called exclamatory sentence. So ऐसे sentence को हम इस कैटेगरी में डालते हैं. किसमें? exclamatory sentence की कैटेगरी में डालते हैं. जो सरप्राइज बताते हो जो किसी फीलिंग के बारे में बताते हैं ऐसे सेंटेंस exclamatory sentence होते हैं. For example, what a horrible scene. God save the beggar. What a beautiful rose. How foolish I have been.
सो अब ये जो जितने भी सेंटेंस है, आप इसे जब ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है कुछ फीलिंग के बारे में हमें बता रहे हैं. नाउ हियर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड. इनके काइंड्स लिखने किस टाइप का सेंटेंस है यहाँ पे. द गर्ल स्टूड ऑन द टेबल, इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, सो इट इज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, यहाँ पे क्या है ये exclamatory sentence. When are you going to Delhi? Interrogative sentence. Give me some money. Imperative sentence. So children, we have done 4 of the questions here. Rest questions are your homework. You have to do on your own. Now to identify the subject of a sentence, we usually ask the question who or what. So अगर हमें sentence में subject को identify करना है तो हम क्या बोलते हैं, क्या question पूछते हैं, who या फिर what. कौन काम कर रहा है या क्या हो रहा है. बिफोर द वर्ब से पूछते हैं. इन द गिवन एग्जांपल्स वी कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बाय आस्किंग हु डाइव इनटू द पूल, व्हाट वाज लॉस्ट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 parts, subject and predicate. The subject of a sentence is a part which denotes a person or a thing we are talking about. So subject क्या होता है, ये sentence का एक part होता है जो ये बताता है कि किस person ने वो work किया है, किसकी बात हो रही है. The predicate is that part of the sentence which tells us about the subject. Predicate part होता है sentence का, वो part होता है जो ये बताता है subject क्या कर रहा है, subject के बारे में और ज़्यादा बताता है. The predicate will always include the verb. Predicate में हमेशा verb हमें मिलेगा. So here some examples are given. He was gone to, he has gone to Mumbai. So here he is the subject and has gone to Mumbai is the predicate. I am happy there, I is the subject and I am happy there is predicate. They are dancing, there is the subject and were dancing is the predicate. Now how to distinguish between a subject and a predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे अंतर बताएं. सो इट माइट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू लोकेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन असर्टिव सेंटेंस. सो जब भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट. लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज इसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है. सो इन केस ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे फ्रंट में लेके आना है. नोट इज गिवन हियर, यू डूअर ऑफ द एक्शन. यू कौन है, जो काम को कर रहा है. Are you reading a newspaper? So अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Are you reading a newspaper? अब यहाँ पे you कौन है, वो इंसान जो न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है. So here you is the subject and the rest of the sentence is the predicate, are reading a newspaper. In an imperative sentence, अब जब imperative sentence की बात करते हैं, the subject is not given there. So here the sentence is open the door. Now I am saying this to the person who is standing in front of me. जो person मेरे सामने खड़ा उसको मैंने ये बोला open the door. So जो person मेरे सामने है, जो इस काम को करने वाला है, that person is the subject. But generally you is regarded as a subject. So here the subject is you and open the door is the predicate. In an exclamatory sentence, we can distinguish between the subject and the predicate by changing the order of the words. So exclamatory sentence में क्या होता है, हम जो है subject को और predicate को find out कर सकते हैं by changing the order. Order को change करने के बाद. How happy she was. कितनी happy थी वो. So here who was happy? Answer आएगा she. So here she is the subject and the rest of the sentence is the predicate here. Now children, here we have to identify the subject and the predicate in the following sentences and write them in the box below. The girl stood on the wall. So here the girl is the subject and the rest is the predicate.
The child was crying, the child is the subject, and rest of the sentence is a predicate. So children, like this, you have to complete the rest of the exercise. Now, the subject of a sentence may be one or several words. तो जो subject होता है sentence का वो एक भी हो सकता है, बहुत सारे words भी हो सकते हैं. The word that is most important in such a phrase is then called the subject word. So ऐसे केस में जो most important होता है वो होता है subject word. Look at these sentences where the subject has been highlighted and these subject word underlined in each case. So यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, उसमें हमें ध्यान से देखना है जो words underline किए गए हैं. Those are the subjects and the subject words. The weather was hot, so here weather is the subject. The hot weather caused the death of many birds. The weather being slutty spoiled our picnic plans. So in the second and the third sentence, children, the subject word have been qualified by an adjective hot. So आप देख सकते हो in the second sentence weather के साथ hot लिखा है और hot is an adjective, so it has been qualified by an adjective hot, and a group of words that act as an adjective respectively. And what is that? Being slur. The is also considered to be an attribute. यहाँ पे जो the है that is said to be as an attribute. The adjective or the adjective phrase that qualifies the subject word in the sentence is called attribute. So जो adjective होता है या जो adjective phrase होता है जो subject word को qualify करता है किसी भी sentence में उसे हम attribute कहते हैं. So now children, here in this exercise you have to look at these excerpts from some famous poems. So poem की कुछ lines दी गई हैं, आप इसे ध्यान से read करेंगे. Identify the subject and the subject verb as well as the attribute in these sentences. So subject word को हमें ध्यान से identify करना है और उसके attributes को, and underline the predicate और predicate को underline करना है. Put a slash where the subject has been omitted. So जहाँ पे भी subject को omit किया गया है उस वहाँ पे आपको एक slash लगाना है. So children, this is your homework. You have to do on your own. Read this and follow read the question twice and do what is required. Now come to let's do more. Identify and write the kind of sentences in the space provided. So space में हमें जो है लिखना है which type of sentence it is. Open the window please. So you are doing some time of request. So this is a imperative sentence, and wow, such a beautiful scenery it is. It's an exclamatory sentence. Rest of the questions are your homework. Now read the sentences and identify the subject and the attribute. So sentence को पढ़ना है, इनमें जो subject है उन्हें we have to find it out and their attributes. Some sentence may have both. तो कुछ sentence हैं जिसमें दोनों ही चीजें होंगी. The quiet mouse ate some cheese. अब जो है आपको जो है subject पता चल जाएगा इसमें कि mouse है. The quiet mouse is the subject and you have to find out the attribute. The attribute that is being used here. So similarly, you have to find out the answer of all the questions given here, and it's your homework. So children, by this we have completed this chapter and I hope that you have understood sentences. So if you have any queries related to this chapter, you can ask me in the comments and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.